Yeah, yeah, like I have shown about various this visualization tool to visualize this protein, and this is visualizer discovery studio and BMDs again important. Then we discussed about structure prediction problem. Okay, today we will discuss about the databases in bioinformatics. So, what is data bank and how many different kinds of databases, different kind of databases are available in bioinformatics, and how do we deal with it, what kind of information is present in the database. So, to begin with, the biological data that we have discussed in my last class, how information, uh, how information is flowing from DNA to phenotype. We call central dogma of molecular biology here, in which any life is regulated. Means two processes are these two processes, transcription and translations, are the key, the backbone of our regulatory mechanisms. DNA is basically an inert molecule, doesn't participate directly in reaction, doesn't so it doesn't produce, so it how it expresses through RNA. So DNA is, and I told you what is genome. Genome is the total genetic material present inside a cell, is referred to as its genome. It is a complete set of instruction to construct an organisms, to maintain, to regulate the life of an organism. So genome is basically the complete genetic material. It can be a DNA, it can be a RNA for certain viruses. DNA. So this DNA is basically expresses through first transcription, where a small region of this DNA gets unwinded, locally unwinded, and then the this RNA polymerase build a transcript complementary to the DNA basis. If there is a in RNA, it will be U. If there is a G in RNA, it will be C. So it will create a complementary strand of DNA. So RNA is a RNA. We call RNA transcript. It is carrying a code, and this code is decoded at the site of protein synthesis, which is ribosome. And these ribosomes are present on endoplasmic reticulum in case of our higher eukaryotic cell, and in prokaryote it is just cytoplasm. So these ribosomes are site of protein synthesis. These ribosomes has got two units, small and large. So this RNA transcript from nucleus, this transcript come out to site of protein synthesis, which is ribosomes, and here in ribosomes this translation process occurs, where it it starts by reading this code encoded in this mRNA, and it creates a peptide chain, and it is a polypeptide chain. We call this polypeptide chain becomes folds and become a protein molecule, which is a three-dimensional configuration. So protein performs a lot of activities, as I told you in my last class, from skeleton protein to our hair, whatever phenotype that we we are characterized by, basically most of them are protein molecules. So they work as a storage molecules. They all antibodies inside our body is a protein molecule. All hormones are protein molecules. Structural part of protein molecules. So all enzymes, of course, are protein molecules. All millions of reactions that are occurring inside our body, which are maintaining our life, are catalyzed by these enzymes, and these enzymes are again
protein molecules. So just imagine millions of reactions are taking place inside our cell, and we know that cells. I think biological organizations, for those who belongs to chemistry background, they understand like it is a pyramidal thing where we start from a cell, and then you can say start from molecules. And when the molecules they come they come close to each other and make, you know, atom come make molecule, molecule make larger molecules, larger molecule make tissue and cells, cells makes, or say organelles, organelles make cells, cells makes tissue, tissue makes various kind of a tissue makes an organ, and organ makes organ system, and finally an organism. So this is a biological organization. This is how we move from atoms to an organism. And then of course we are living in a ecosystem which is particularly belongs to us, or every organism has its own ecosystem. So this is how life flourishes. So this cell can be termed as the information exchange, where information is exchanging from one molecule to another molecule. डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से फिर प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन गया. ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल इज अ फंक्शनल मॉलिक्यूल. Okay, so then this RNA are playing important role. Like यहाँ पर mRNA जो DNA से small region local environment होकर एक transcript बनता है. And this transcript from nucleus it moves to cytoplasm at the site of protein synthesis, that is ribosomes. And here this synthesis of polypeptide chain occurs, where this tRNA molecules, these tRNA molecules bring the amino acid to the site. Which here these two sites are there, acceptor site and peptidyl site. And peptidyl site makes a polypeptide chain, and here it comes. So tRNA molecules, the tRNA molecules contain the anticodon site. So this is codon, and tRNA contains anticodon, so that it can sit here. And then finally this amino acid will attach to this peptide, and thereby the size of the chain increases depending upon the size of the mRNA molecule. Because three means one codon means three bases makes one amino acid. So the length of the peptide chain is 1/3. That is, if 99 is the length of the mRNA, then the size of this peptide will be 33. Okay, so this is a it behaves like a molecular exchange. एक सेल जो है एक एक्सचेंज की तरह काम करता है. And this is how we regulate our life. Life में जिंदा हम क्यों हैं? Because we are running this central dogma, and this central dogma is it is vital to any life, whether it is a bacteria, whether it is all our. I discussed about pathogens. So these are I discussed about our 5 pathogens, and these are bacteria, viruses, fungus, protozoa, and finally helminths, worms. Okay, so these are major 5 pathogens which are responsible for a disease, majority of the diseases directly, infection, and this system again is responsible to defend. Okay, so we have an immune system. Again, immune cells are there. They make, like similar procedure, they make antibodies. Okay, so these antibodies then they fight with the antigen. So this is basically the molecular exchange, and we can see here at every stage the data is available. Okay, so let's move. So you can understand that organism is composed of the genome, which is basically we can during cell division we can see all DNA in arranged into chromosomal form. For example, metaphase. All these
क्रोमोसोम्स आर विजिबल, अदरवाइज ये इसे क्रोमेटिन फाइब्रेट्स के रूप में बिखरे हुए रहते हैं। एक सेल के अंदर जितना भी डीएनए है वो एक, जैसे अगर हम कुछ धागे ये डाल दें फैल जाएगा धागा पूरा, ऐसे डीएनए फैला हुआ रहता है। और जब सेल डिवीजन होता है उसमें मेटाफेज के समय ये सारे के सारे एक एक पेट के ऊपर अलाइन हो जाते हैं क्रोमोसोम के। तो हम एक नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी इनको देख सकते हैं। यू कैन विजुअलाइज ऑल दिस क्रोमोसोम्स। So this is genome. You can say, then you can store this genome in the form of chromosome. And chromosomes contain genes, and these genes are nothing but the genes are nothing but um, genes are a segment, small segment of the DNA itself, and which carries a code to create transcript, and this transcript is able to form a protein molecule. So gene is a region, is an expressed part of the genome, मीन्स ऐसा जीनोम का पार्ट जो कि एक्सप्रेस होकर आरएनए और फिर फाइनली एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना सकता है, उस रीजन को वी कॉल इट जीन. जीन इज बेसिकली a part on the chromosomes responsible to create mRNA express RNA, means gene expression का क्या मतलब हुआ, RNA बनाना, mRNA बनाना और फिर ये mRNA से प्रोटीन का बनना, और एक्सप्रेशन ऑफ द जीन. बट जरूरी नहीं है कि वो हर बार प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाएगा. कैन मेक आरएनए बिकॉज राइबोसोम से या कोई स्ट्रक्चर प्रोटीन. और हम लोगों ने देखा एमआरएनए इटसेल्फ एक्ट एज ए एंजाइम, वी कॉल राइबोजाइम्स. राइबोजाइम्स आर दोस आरएनए मॉलिक्यूल्स व्हिच एक्ट एज ए एंजाइम, दे कैन कैटलाइज रिएक्शन. So genome can be categorized into chromosomes. Chromosomes contain genes. Genes develop DNA. DNA makes RNA. RNA makes protein sequence. And this protein sequence, this is linear, only linear. This linear chain folds into three-dimensional structure, folded protein. And this is final structure which is responsible for the biological function. Like if it is enzyme, it can catalyze a reaction, or if it is any phenotypic character, you can see the character when it is mature. It is so from genome to this pathway, we at every step we have some information, and at every step, if we have information, we have created databases based upon the information. So here, like this is we generate the information, and this is in my last class I explained about this. Here, like cell contain these chromosomes, and if we extract out this chromosome, and then we can, if we uncoil it, these are supercoiled. So these are basically these DNA are basically wrap around means on a histone proteins. So they create a bead-like structure, and finally these beads they supercoil and create this kind of chromosome. So this is normal coiling. This is coiling of the bead, and this is DNA. तो these octamers we call this octamers. तो आठ के रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसके ऊपर डीएनए कॉइल होता है. हिस्टोन प्रोटीन इनको लपेटने में हेल्प करता है, और ये इस तरीके से बीड लाइक स्ट्रक्चर. और फिर ये बीड्स जो हैं वो अपने आप पे कॉइल होते हैं, बिकॉज सुपर कॉइलिंग ऑफ दिस बीड्स टू क्रिएट अ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. एंड दिस इज इफ यू अनकॉइल इट, यू कैन सी द डीएनए स्ट्रैंड. 2 स्ट्रैंड डीएनए के होते हैं जिसके अंदर दोनों एंटी पैरेलल, एक इस दिशा में जाएगा, एक इस दिशा में जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ, एंड bases are A, and A in case of a DNA, A is basically bound to T with double hydrogen bond, and G with triple hydrogen bond. G and C, they have triple bond, and A and T, these two bases basically are connected with 2 hydrogen bonds. This is how. So this is then finally we use the sequences Sankar dideoxy method, by which we can like ATGC. Here 4 colors we can use 4 different colors for 4 bases, and then we can
run the reaction single dideoxy method. We use dideoxy, which will cut the DNA, and finally, so this is this is not the NGS but the earlier single dideoxy method for sequencing the DNA, and you can see the bands. This is consensus sequence, and these are multiples. And finally, we store this information inside the computers. Okay, this is how we generate DNA sequence and protein sequences. So at every step, like we can see, we have information. Okay, so now let's come to our topic of what are databases. So databases are nothing but softwares. These are softwares which we use to collect and store information in organized manner. That is important term. Organized manner means we cannot store the information randomly. Rather, we are storing in some in tables or in some organized way. For example, like we maintain a रजिस्टर ऑफ ए क्लास, तो एक क्लास के लिए एक रजिस्टर है, इसमें बच्चों के नाम है, और अगर हम एक बच्चे को एक पेज दें, सपोज devote one page for one student, and suppose there are 100 students in a class, so we for 100 students we need to have 100 page register. Okay, so one page is for one entity or one person, one student. We call it is a like flat file system. यहाँ पर एक पेज एक बच्चे के लिए डिवोट है। अब उसके बाद में उस पेज में उस बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन होगी। It will contain all information of that particular student, name, subject area, location, email, all ORCID IDs, whatever information is you can collect about that student, you can put in one page. Okay, so this is such a system where we store information in like a regular register system of our class. We call flat file system. Okay, so what is that? Okay, here like database task is, since we are storing inside, we are not just copying information and putting in our drive. Rather, we are using a software which is arranging this information in some organized manner, some tools. So any so the database task is basically to get data, organize and store data, and give it back to the user whenever demanded. So this is the task of any database. And databases are software. So there are two systems. One is the flat file system, where we, as I explain about the register student record of one page, register in flat file system. Another is relational system, where we store information in chunks, in tables. So, for example, why we need this? Okay, for now, just understand it. This is in relational database system. We store information in tables. Why it is so complicated? Why we need this relation? If we are storing information in a flat file system, जब एक पेज एक बच्चे के लिए आसानी से हम लोग कर रहे हैं, तो क्या जरूरत आई हमें कि हम रिलेशनल सिस्टम को ले? ये जरूरत आती है जब साइज of databases increases with time. Okay, 100 बच्चों की क्लास में, या सपोज 20 बच्चों की क्लास थी, हमने 20 बच्चे करती है 20 पेज, 100 बच्चों की क्लास है, तो 100 पेज रजिस्टर इज अगेन, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. और मैं कहता हूँ कि चलो जस्ट गिव मी द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट जो कि से इन जयपुर मानसरोवर में रहते हैं, इट्स अ प्लेस मानसरोवर, और जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है. क्या करना होगा? सपोज यहाँ पर 100 बच्चे हैं, तो वी हैव टू टर्न 100 पेज हैं, तो हर एक बार पेज देखकर बच्चे का नाम देखना पड़ेगा, फिर उसको देखना पड़ेगा एड्रेस उसका कि मानसरोवर है या नहीं है. ओके, सो दिस इज द फ्लैट फाइल सिस्टम, जहाँ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन सिंगल पेज वाइज. एंड नाउ 100 बच्चे हैं, 100 बार पेज इंफॉर्मेशन. अब सपोज 1000 हो, तो और यहाँ हम मिलियंस की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं 100 बच्चे होंगे तो आप 10 मिनट में दे दोगे. अगर मैं 1000 बच्चे होते तो क्या करोगे? इट विल टेक 1 to 2 आवर. और यहीं अगर 1 लाख बच्चे हो, तो ठीक है, 1 महीने बाद, और बढ़ जाएगा 10 लाख, तो बोलोगे 6 महीने में आप बता दोगे कि कहाँ
कौन कौन बच्चे हैं जो कि एस नाम से स्टार्ट होता है और मानसरोवर में रहते हैं. इट इज नॉट इजी. ओके, दैट इज वाई कॉन्सेप्ट ऑफ इस इंफॉर्मेशन को क्या टेबल्स में रख सकते हैं ताकि कंप्यूटर को तो इन इंफॉर्मेशन को भी स्टोर इन टेबल्स. तो और इन टेबल्स को जोड़ने के बाद में वही, तो जैसे ये एक रिकॉर्ड है, ये आपका जेन बैंक का फ्लैट फाइल का रिकॉर्ड है, और इस फ्लैट फाइल के अंदर यू हैव रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड नेम और यहाँ उसकी वैल्यू है. और ये रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हम इस इंफॉर्मेशन को ये टेबल्स में स्टोर करके आपस में लिंक कर देते हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल एक बच्चे का इंफॉर्मेशन दिया और उसका जो कम्युनिकेशन है उसको एक टेबल में डाल दिया, उसका सब्जेक्ट और उसमें डाल दिया, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उसकी डिटेल एक में डाल दिया, इस डिपार्टमेंट का वो डाल दिया, एकेडमिक रिकॉर्ड्स उसके एक साथ डाल दिया. तो वी कैन डिवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट इन मल्टी, उस बच्चे का रिकॉर्ड है उस टेबल के अंदर. सो वी कैन यूज अ की, प्राइमरी की, and we can use, means all, in all the tables we will use a primary key to indicate the record of that student. Okay, so that is how we can join multiple tables together और एक ही बार में सारा information निकालना होगा. So this is what this databases do. Okay, so इसके लिए लैंग्वेज है we call SQL, structured query language, जो कि database की लैंग्वेज है. और ये लैंग्वेज के थ्रू हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल्स क्रिएट करते हैं, उन टेबल्स में फील्ड को ऐड करते हैं, फील्ड में नया फील्ड ऐड करना, फील्ड को हटाना, और जो डाटा फीड करना उसके अंदर, और फीड करने के बाद में उस डाटा को अपडेट करना. ओके, उसके बाद में इसके अंदर व्यूज बनाना, डाटा को इस टेबल को पूरा पूरा चाहे कॉपी कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं. सो SQL is basically a language of this database, जो कि हम काम में लेते हैं. We create this database using SQL language. Okay, clear? Is this clear, everybody? Am I audible, Radha Kishan? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Yes, so sir. okay. So there are a lot of challenges of large database. For example, storage is a problem. Then modeling is a problem. There are different kinds of model. Relational, as I just shown you, the relational model, we have hierarchical model, semi-structural model, object-oriented model, multiple model are there. Efficiency, update, query, analysis, interpretation means how do you visualize your data. वो भी अपने आप. So this is again a very big field where we are dealing with the data, because the flow, if we talk about the flow of the data, incoming data is too much. डाटाबेसेस हर 12 महीने में डबल हो जाता साइज उसका, इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो उसको मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है. सो नाउअडेज व्हाट वी मींस वी आर यूजिंग वेरियस मॉडल्स, और सब लोगों ने अपने अपने मॉडल्स बना के देख लिए हैं, बट नाउ फाइनली मींस वी फॉलो द XML मॉडल. सो XML में रखकर उस डेटा को एनक्रिप्ट कर वी कैन put all data in XML format and then we can perform our activity. So अब नया जमाने का NoSQL databases are there, इसमें MongoDB बोलते हैं, और कई सारे नए नए चीज़ें आ गई हैं जो कि, बट these are classical system जो कि हमारा आज भी बहुत जगह जहाँ वही चल रहा है, जिसे हम लोग MySQL कहते हैं. It's community version, you can download and you can create databases. Okay, now come to a bioinformatics point of view. These databases are of two kinds: primary database and secondary database. Primary तो वो है जहाँ रिसर्चर लैब से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को सबमिट कर रहा है. ओके, फॉर एग्जांपल NCBI का जेन बैंक है, EMBL है, DDBJ. These are ये प्राइमरी सोर्स, जहाँ पर थ्रू आउट द वर्ल्ड दे मीन्स researcher submit information to this database directly. So they have a form, like for example here Sakvin है, Babin है, NCBI के अंदर. You can download this tool, then where you just fill the information in the tool and then you can submit to this database. So primary databases का मतलब है जो कि लैब से डायरेक्टली
डाटा बैंक में हम लोग सबमिट कर रहे हैं। और एक होता है सेकेंडरी डेटाबेस, जिसमें हम जो सबमिट कर चुके हैं इंफॉर्मेशन जो प्राइमरी में अवेलेबल है, वी यूज वेरियस मैथमेटिकल और computational tools to classify the information. We divide information based upon various aspects. For example, conserved region को निकाल लें, उसके लिए बना दें कि क्लासेस बना देते हैं उसकी. Secondary databases are, they are basically derived from primary data. Okay, and but this secondary database, these are, these carry important specialized information, critical information, which primary doesn't. Primary contain all the information, but secondary is basically derived और कुछ algorithms, कुछ फार्मूला लगा के उससे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया हम लोगों ने. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन. So here, for example, like pfam, blocks, prints, motif, emotive, they are secondary databases of sequences. So if we talk about nucleotide repository, DNA की अगर हम लोग बात करते हैं, जीनोम की बात करते हैं, तो वर्ल्ड के अंदर 3 मेजर रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं एनसीबीआई, ईएमबीएल, डीडीबीजे. ये एक एनसीबीआई बैथिस्टा मेरीलैंड के अंदर है, डीडीबीजे मिशिमिटा जापान में, ईएमबीएल हिल्बर्ग जर्मनी के अंदर है. तीनों सेंटर्स जो हैं दे वर्क इन कोलैबोरेशन. जहां आपको वर्ल्ड में कहीं भी अगर आपको जैसे डाटा बैंक में अपनी सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन को सबमिट करना है, तो आपको सभी में जाके करने की जरूरत नहीं है. आपको किसी भी एक में सबमिट करना है, वो दूसरे को अपडेट कर देगा. इट विल अपडेट अनदर वन. ओके, सो दे वर्क सिंस 82, दे आर वर्किंग इन कोलैबोरेशन. उसमें दीज आर वेबसाइट्स जो आप जाके वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं. और इफ़ यू लुक एट दी साइज, तो आप देखेंगे यहाँ से ये तो हमारा नॉर्मल सीक्वेंस है. 85 से अगर देखते हैं तो नॉर्मल सीक्वेंसिंग चल रहा था, थोड़ी पुरानी साइड है ये. और उसके बाद में जब हम लोग यहाँ से देखते हैं 2000 के बाद में, जब एनजीएस आ गया, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर जो अब एक एक जीन को सीक्वेंस नहीं करते, यहाँ पर पूरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम को सीक्वेंस करते हैं, होल जीनोम अप्रोच करते हैं. होल जीनोम सीक्वेंसिंग, WGS जिसे हम लोग कहते हैं, होल जीनोम सीक्वेंसिंग. तो ये अपना जनरल नॉर्मल क्लोन करने का अप्रोच की तरह सीक्वेंस भी हो सकता है या जीनोम भी हो सकता है. इसका साइज, और अब ये देखेंगे अगर हम लोग, तो इसका साइज को सरपास कर चुका है. ओके, सो ये तो बेसेस हैं, ये नंबर ऑफ सीक्वेंसेस हैं. यू कैन सी इट इज अ बिलियन, इट इज मोर देन बिलियन. सो दिस इज 1 बिलियन जो है वो इजीली 15 में टच हो गया था. अब सोचो आज के डेट में जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं. ये यहाँ पर जो दिखेंगे बेसेस है, ये 2 बिलियन, 2.43 बिलियन सीक्वेंसेस रिपोर्ट हो चुके हैं. ये अभी 23 का पुराना स्लाइड है मेरा. आज का देखेंगे तो यहाँ से अपन जाके देख सकते हैं रिलीज, इसमें आज का डेटा आ जाएगा कि कितना सीक्वेंस है. ओके, सिमिलरली दिस इज, यू कैन सी ग्रोथ को हम लोग देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है इसके अंदर. दिस स्लाइड इज फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. ओके, सो वो तो डीएनए की बात हुई. इन केस ऑफ प्रोटीन वी हैव टू, प्रोटीन सीक्वेंस के रूप में इंफॉर्मेशन होती है और प्रोटीन स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास में. तो सीक्वेंस के लिए जो पहले PIR एक डेटा बैंक है, स्विस प्रोट है, और TREMBL, ट्रेम्बल जिसे हम लोग कहते हैं, ट्रांसलेटेड EMBL. EMBL तो न्यूक्लियोटाइड का होता है, तो इसको ही ट्रांसलेट कर दें तो TREMBL, ट्रांसलेटेड EMBL हो जाता है. प्रोटीन स्ट्रक्चर के केस पे प्रोटीन डेटा बैंक है, न्यूक्लियोटाइड है और MMDP है, मैक्रोमोलेक्युलर डेटा बैंक. बट इंपॉर्टेंट थिंग, अनलाइक दिस न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस, दे आर नॉट मिरर ऑफ वन अनदर. ये सब अलग अलग है, ये स्ट्रक्चर का, ये सीक्वेंस का, बट दे इनमें भी आपस में कोलैबोरेशन ही है. स्विस प्रोट जो है वो हाईली एनोटेटेड डेटाबेसेस है, तो वो कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास में है वो, तो दीज आर बेसिकली दिस तक ये है, ये ईएमबीएल का साइट है, ये PIR का है. बट ये जो PIR है अब एग्जिस्ट नहीं करता. इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ चुकी है, और PIR की जगह जो है वो PIR, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ये एक मार्गरेट डे ऑफ लेडी थी, मार्गरेट डे ऑफ, वो अपनी किताब थी एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर, उसको ही इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था पूरा इसको. ओके, तो प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस में कन्वर्ट कर दिया था इसी सीक्वेंस को. तो बट नाउ अभी इसका रिलीज नहीं आता है.
बट एक ज़माने में ये सबसे ऑथेंटिकेटेड रिसोर्स माना जाता था। देन स्विस प्रोट आया, जो कि स्विस प्रोट में ये सीक्वेंस को जितने भी सबमिट करते हैं उसको दे एनोटेट देमसेल्फ, मींस एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं। तो जहाँ जहाँ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बात करते हैं बिलियंस में जा रही थी हमारी, वहीं अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो ये जस्ट 5 लाख के आसपास, 5-6 लाख सीक्वेंस है। कितना कहाँ 5-6 लाख, कहाँ वो अरब में जा रही है, 1 बिलियन सीक्वेंस है। तो ये गैप क्यों है? बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ एनोटेशन। स्विस प्रोट जो होता है उसके अंदर जो भी सीक्वेंसेस मौजूद हैं दे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई देमसेल्फ, इसीलिए उसकी संख्या काफ़ी कम है। और इट कंटेन मिनिमल लेवल ऑफ रिडंडेंस। रिडंडेंस का मतलब होता है रिपीटिशन, एक ही चीज बार 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 आई जाए, वो कम है इसके अंदर। और हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन विद अदर डेटाबेसेस। तो उसके बाद में अब क्या हुआ कि एक ईएमबीएल और जो स्विस प्रोट, स्विस इंट्रो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का स्विस प्रोट है, और इसका तो ये पीआईआर, ये तीनों ने मिलकर एक सिंगल डेटा बैंक बना दिया, जिसको इन्होंने नाम दिया यूनिप्रोट। तो ये कंसोर्शियम बनाया इन्होंने और तीनों को कंबाइन कर दिया इसमें। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक 2 सेक्शन बना दिए इन्होंने। एक तो कहा इन्होंने यूनिप्रोट केबी, दैट इज नॉलेज बेस, जिसमें 2 पोर्शन होते हैं। एक तो नॉलेज बेस के अंदर एक तो वो पोर्शन है जो रिव्यूड है, जिसे हम स्विस प्रोट के नाम से पहले से जानते हैं, जो कि मैनुअली उसे क्यूरेट करता है, एनोटेट करता है। एनोटेशन का क्या मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में डिटेल में पता करना, एक्सपेरिमेंटली करके उसको एनोटेट करना, कहाँ से कहाँ है, कहाँ से कहाँ क्या रीजन है, क्या फंक्शन है, उसको दिस प्रोसेस का एनोटेशन। तो उसको हम एनोटेट करते हैं, मैनुअली उसको देखते हैं, एक्सपेरिमेंट लगा के चेक करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं, तो सारी चीज़ें पता करने के बाद में उसको हम स्विस प्रोट के अंदर रखते हैं। दूसरा है अनरिव्यूड वर्जन, जिसमें जो कि हमारा ईएमएल का पार्ट था, जो कि कंप्यूटेशनल एनालाइज था, जिसमें ईएमएल के अंदर क्या है, डीएनए के सीक्वेंस, उसको कंप्यूटर के अंदर थियोरेटिकली चेंज कर दिया, इसमें अमीनो एसिड सीक्वेंस के अंदर, और जो सीक्वेंस बनाया उसको यहाँ प्रोटीन सीक्वेंस के रूप में बता दिया। सो बेसिकली इट इज अ थियोरेटिकल कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। इट क्रिएट्स ट्रैम्बल ट्रांसलेटेड ईएमएल। ओके, सो जो भी सीरियस रीजन होता है वो उसी का पार्ट होता है। और हाउ इस तरीके से हम लोग देखते हैं यूनिप्रोट के भी ट्रैम्बल, स्विस प्रोट एक्सपेरिमेंटल मैनुफैक्चरिंग करते हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस कर दिया है। इसके बाद इसको यूम्स में डिवाइड कर दिया है, ये यूनिक रेफरेंसेस सीक्वेंसेस बना दिए हैं, क्लस्टर्स बना दिए हैं इनके अलग से। एक या कई सारे सोर्स से लेते हैं, यहाँ पर करते हैं। दिस इज हाउ द प्रोटीन sequences are working. So you can see this is how it works. So I hope now you understand about the data bank प्रोटीन के और डीएनए के क्या क्या होते हैं। अब हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। प्रोटीन के स्ट्रक्चर डाटाबेस बेसिकली जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी डाटा बैंक जहाँ प्रोटीन को हम सबमिट करते हैं, ओके। तो जो यहाँ हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर को हम लोग सबमिट करते हैं। अब स्ट्रक्चर को सबमिट करने की बात करें तो स्ट्रक्चर को रिजॉल्व करने की बात करें। सो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जो हैं इस स्ट्रक्चर रेजोल्यूशन की, मैंने बताया था, either क्रिस्टलोग्राफी या एनएमआर इमेजिंग, जो दीज आर 2 मेजर टेक्निक बाय व्हिच वी रिजॉल्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें क्रिस्टलोग्राफी में वी नीड टू क्रिएट अ क्रिस्टल ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, एंड इन एनएमआर हमें सॉल्यूशन के अंदर, तो एनएमआर सॉल्यूशन के अंदर हमें इमेज जनरेट करता है। तो मल्टीपल, एक जो उसका सिंगल मॉलिक्यूल का कोई सिंगल स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, वो एक मल्टीपल स्ट्रक्चर हमें करीबन 50 के आसपास मॉडल्स मिलते हैं, मल्टीपल मॉडल्स मिलते हैं एक प्रोटीन के, ओके, बिकॉज वो एक एक्वस फेज के अंदर होता है। बट इन क्रिस्टलोग्राफी उसको क्रिस्टलाइज करके एक सिंगल स्ट्रक्चर हमें मिलता है, एक हाई रिजोल्यूशन स्ट्रक्चर में। बड़े बड़े जो भी प्रोटीन के सीक्वेंस है, स्ट्रक्चर से वी कैन रिजॉल्व थ्रू क्रिस्टलोग्राफी। बट सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है क्रिस्टलोग्राफी का वो है इसका क्रिस्टल का बनना,
और दूसरा फिर कई बार प्रॉब्लम आती है, फेस प्रॉब्लम की आती है, जहाँ पर फेस जो है जब हम लोग 10-10 डिग्री पे घुमाते हैं उसको, तो सब जगह से जब वापस स्केल मर्ज करते हैं तो वो फेस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो उसको फिर सॉल्व करने के लिए देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स, आइसोमॉर्फस रिप्लेसमेंट है, कई सारी टेक्निक है जिसके थ्रू वी try to solve the face problem. Okay, so this is how we solve we create structure, और उसको सबमिट करने के लिए प्रोटीन डाटा बैंक है और मैक्रो मॉलिक्यूलर एनसीबीआई में है। अपने आप में ये एक आरसीएसबी रिसर्च कोलैबोरेटरी ऑफ स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने एक कंसोर्शियम बनाया जो कि ये इसका कंट्रोल करता है। ओके, अब सिमिलरली जैसे वहाँ प्राइमरी सीक्वेंस, जैसे प्राइमरी डाटा बैंक था हमारा, जेन बैंक था हमारे पास में, या डीडीबीजे था हमारे पास में, या वहाँ हम लोगों ने सेकेंडरी डाटा बैंक बनाया। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, सेकेंडरी डेटाबेसेस होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे यहाँ पे स्कोप, कैथ, डाली, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, सो इसे क्लास, आर्किटेक्चर, टोपोलॉजी, होमोलॉजी, इस तरीके से ये हमने। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर की बात करें तो और बहुत लिमिटेशन है, ये साइट्स ही इनकी। और इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये 2023 की हमने देखी थी स्लाइड्स, जिसमें करीब 2 लाख के आसपास स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया भी था अभी स्लाइड्स। तो उसमें कितने स्ट्रक्चर थे? 232 के आसपास स्ट्रक्चर थे, है ना? कल मतलब लास्ट क्लास में जो मैंने आपको ये दिखाया। ओके, सो यहाँ देखेंगे कि वहाँ 5-6 लाख स्ट्रक्चर है, यहाँ 2 लाख स्ट्रक्चर है। डिफरेंस कितना है इसके अंदर? लिमिटेशन क्या है? क्रिस्टल। ओके, और प्रोटीन को सॉल्व करना आसान नहीं है, लार्ज साइज स्ट्रक्चर, इसीलिए कम है। अब इसमें जितने भी प्रोटीन्स रखे हुए हैं, प्रोटीन रखे हुए मतलब जिनके स्ट्रक्चर रखे हुए हैं, उन सबको एक कोड दिया हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं पीडीबी आईडी। ये 4 लेटर अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जैसे 3INS, तो लग रहा है कि इंसुलिन के लिए है ये 3INS। तो इस तरीके से वो जितने भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं उसको एक कोड दे रखा है। ये स्ट्रक्चर है पीडीबी के बाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ग्रोथ हुआ है पीडीबी का। तो ये जो है बाद में, पहले तो बहुत मुश्किल से क्रिस्टल बनाए आते थे, जिसे जैसे हम वक्त के साथ में टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, और ये जो है साथ साथ में जो नंबर ऑफ एनिमल जो रिलीज है स्ट्रक्चर के, देखेंगे यहाँ पे आप बहुत घट गए हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है, क्यों अब ये एक डूलिटल साइंटिस्ट था, एंड डूलिटल टोल्ड दैट देयर विल बी अराउंड 1200 फोल्ड पॉसिबल है, यानी कि फोल्ड, हर एक प्रोटीन का अपना एक फोल्ड होता है जिसमें वो अपने उसका एक कन्फर्मेशन होता है जो कि उसके फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर उस कन्फर्मेशन में स्पेसिफिक फोल्ड होता है, फोल्ड मतलब जो उसका कन्फर्मेशन, अगर उसमें कोई चेंज आ गया तो वो प्रोटीन अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो जो फोल्ड है वो कहा था कि करीब टोटल जो फोल्ड हो गए वो 1200 के आसपास था उनका प्रोडिक्शन। तो आज तक करीबन हम लोग 900 से 1000 के बीच में हम लोग फोल्ड को रिजॉल्व कर पाए अभी तक। और ये जो 2003-4 बार में तो सब ऑटोमेटिक हो गया। पहले तो जो क्रिस्टल बनाने के लिए जो NaCl के अंदर या PG के अंदर जो प्रोटीन को क्रिस्टल के रखते थे, वो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट लगाते थे। अब तो ये सब रोबोट का काम है, रोबोट रुजुकू है, कई सारी मशीन्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली ये सब काम करती हैं, जिन्हें हम क्रिस्टल ऑटोमेटिकली क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। और देन ये NDB है, यहाँ पर फोकस हम लोग जो DNA के स्ट्रक्चर है, तो करीबन इसमें 16-17 हज़ार एंट्रीज हैं। ऐसे ही ये MMDB है NCBI के अंदर, ये वही PDB के हैं, बट इसने इन्होंने फॉर्मेट चेंज कर दिया है ताकि इसको फास्ट तरीके से करना है। और एक टूल भी है इनका जिसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, CN3D के नाम से जानते हैं, ये उसको विजुलाइज करने का काम है। वही इंफॉर्मेशन है, वही चीज़, और कई सारे टूल इसी में ऐड कर दिए हैं, जैसे वास्ट फॉर स्ट्रक्चर सिमिलरिटी सर्चिंग के लिए वेक्टर बेस्ड है, जैसे CN3D व्यूअर है, ये विजुलाइज करने के लिए। तो अगर हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिससे वहाँ हमने बात की थी सेकेंडरी डेटाबेसेस की, स्ट्रक्चर के अंदर भी हमने क्या किया कि जो भी हमारे ये 2-2.5 लाख स्ट्रक्चर हैं, इनको लेके हमने क्लासीफाई कर दिए। तो यहाँ जो ये क्लासिफिकेशन है ये स्पेसिफिक तरीके से किया गया है। जैसे वर्जिन रनर, इन्होंने क्या किया, स्कोप स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन प्रोटीन दिया, जिसके अंदर इन्होंने
क्लास, फोल्ड, सुपर फैमिली, फैमिली, इस तरह के 4 क्लासिफिकेशन किए। क्लास बनाया, उसके अंदर फिर फोल्ड बनाया, उसके अंदर सुपर फैमिली और फिर फाइनली फैमिली डिवाइड किया। तो जितने भी प्रोटीन है उनके स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफाई किया है यहाँ कि स्ट्रक्चर के अंदर सारे अल्फा, जैसे हेलिक्स होते हैं या शीट्स होते हैं, तो सारे के सारे अल्फा हेलिक्स ही हैं, सारे के सारे शीट्स ही हैं, या उसमें मिक्स हैं, किस तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसके आधार पर क्लास को इन्होंने बना दिया। फिर फोल्ड की सिमिलर स्ट्रक्चर है, फोल्ड सिमिलर है नहीं। फिर सुपर फैमिली जहां पर इन्होंने होमोलॉजी को काम में लिया है, और फाइनली होमोलॉजी जो है जिसके बीच में ऊपर जो सुपर फैमिली लिया वहां डिस्टेंट सीक्वेंस सिमिलरिटी लिया गया है, और फैमिली के अंदर होमोलॉजी के साथ साथ क्लोज सीक्वेंस सिमिलरिटी लिया है। इस तरीके से इन्होंने क्लास, फोल्ड, सुपर फैमिली, फैमिली बनाया। तो ये हम लोग जब जाके देखते हैं तो यहाँ हमें दिखता है कि ये रूट बना दिया, ये क्लास है, फोल्ड है, सुपर फैमिली, फैमिली, और ये पीडीबी इसकी एंट्री है इसके अंदर। फाइनली इस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है। ओके, तो इस तरीके से पूरे जो भी हमारे 2.5 लाख स्ट्रक्चर हैं, उन 2.5 लाख स्ट्रक्चर को क्लासिफाई किया है। सो देयर इज we call it structural classification of protein based upon the secondary structure, based upon their homology. We have classified all existing structure of protein data bank. ओके, सो कैट भी था, इसके अंदर भी लगभग सेम सा चीजें ऑरेंज में दिया है। यहाँ पे क्लास वही रखा कि सारे अल्फा हेलिसेस हैं, बीट्स हैं, अल्फा फॉलोड बाय बीटा है, या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देन आर्किटेक्चर उसका दिया है, जिसमें यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट का ओरिएंटेशन दिया है, बट कनेक्टिविटी को इग्नोर किया गया। फिर टोपोलॉजी दिया है, टोपोलॉजी उसका स्ट्रक्चर है, ओरिएंटेशन एंड कनेक्टिविटी। इसको फोल्ड कहा हम लोग स्कोप में, इसको टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं, फोल्ड कहते हैं। यहाँ ये लोग टोपोलॉजी कहते हैं, और स्कोप में इसको फोल्ड कहते हैं। और बाकी होमोलॉजी वही है जो सीक्वेंस सिमिलरिटी सर्च करते हैं। दो सीक्वेंस, यानी उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर की जो सीक्वेंस है उसको कितनी सिमिलरिटी, वो होमोलोगस है या नहीं, उसके आधार पर इसको हम निकालते हैं। तो इसको कैथ क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, और ये इस तरीके से कैथ का सिस्टम है। अब प्रोटीन स्ट्रक्चर के फॉर्मेट की अगर बात करते हैं तो जेनबैंक एंट्री की हमने बात करी थी। जेनबैंक की एंट्री है बिकॉज जो भी डाटा बैंक में हम लोग इन्फॉर्मेशन रखते हैं वो किसी न किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट आर स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड सिस्टम जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो जो कि वर्ल्ड में वो डिसाइड होता है, अलग अलग कंसोर्शियम अलग अलग जगह मीटिंग करते हैं, वहाँ डिसाइड होता है कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन को एक हम स्टोर करें, कितनी मिनिमम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके अंदर। एक फॉर्मेट बनाया है उसके अंदर, उस फॉर्मेट को हम फाइल फॉर्मेट कहते हैं। अलग अलग सीक्वेंस, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग फाइल फॉर्मेट होता है। तो जैसे जेनबैंक की एंट्री है, उसका फाइल फॉर्मेट इस तरीके से होता है जिसमें कि ये इंफॉर्मेशन है उसमें। हेलो, हाँ, सो इस तरीके से जेनबैंक की एंट्री है यहाँ पर। then now you can see these are basically the record names और इसकी information। यहाँ पर इस जेनबैंक के एंट्री को we can divide into 2 parts। one is called header section और another is called feature table। तो feature table में ये feature जो टेबल है यहाँ से चालू होती है, जिसमें source है और CDS मतलब कोडिंग सीक्वेंस, कहाँ से कहाँ तक कोडिंग सीक्वेंस जो कि R ने बनाएगी। ओके, so we call it CDS सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस। और ये है डाटाबेस क्रॉस रेफरेंस। This is linked to another data bank. This is translation of this DNA. Finally, the base count, how many A, C, G, and T are present in this sequence. Finally, the sequence, your sequence, DNA sequence. This is how। और जो ये header section होता है इसमें locus, यानी कि locus उसका डिसाइन करते हैं। Then this is important, accession number. Every entry has a unique accession number। Every sequence entry, मैं यहाँ बेस की एंट्री की बात कर रहा हूँ, एक सीक्वेंस एंट्री, एक सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस को एक एक्सेशन नंबर दिया जाता है। ओके, फिर इसके बाद में तो ये इसका न्यूक्लियर इंडेक्स आईडी है, उसका कीवर्ड है, सोर्स कहाँ से लिया गया है, देन क्लासिफिकेशन उसका, देन उसका रेफरेंस कहाँ पेपर पब्लिश किया गया है, कौन से जर्नल में किया गया है, इस तरीके से। ओके, सो दिस इज हाउ द जेनबैंक एंट्री। और इसी तरीके से ईएमबीएल की एंट्री, यहाँ पर सेम सीक्वेंस है, यही चीज यहाँ है, यही चीज यहाँ है, बट उसमें हम देखेंगे कि वही चीज को यहाँ पर 2 जो फीचर टेबल है, जो रिकॉर्ड है, उसको 2 कैरेक्टर से दिखाया गया है।
वही चेन इंफॉर्मेशन है, बट यहाँ डेट, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ऑर्गेनिज्म सोर्स, क्लासिफिकेशन, रेफरेंसेस, इस तरीके से नाम दिया गया। वह फाइनली सीक्वेंसेस है ATGC, दिस इज EM गिवन। एक प्रोटीन जो मैं बात कर रहा था, प्रोटीन स्ट्रक्चर डाटाबेस, उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट्स में XYZ कोऑर्डिनेट होते हैं हर एक एटम के। ये मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास के अंदर में। इसमें हेलिक्स, पहला हेलिक्स A चेन के अंदर ल्यूसीन 9 से चालू होगा और ग्लूटामिन 18 पे खत्म होगा, हेलिक्स नंबर 1। फिर दूसरा हेलिक्स जो है वो ट्रिप्टोफैन से चालू होगा 31 से, और इस तरीके से ये सिस्टीन डाइसल्फाइड बॉन्ड, सिस्टीन पहला डाइसल्फाइड बॉन्ड, जहाँ पर ये 53 नंबर और 1653 1667 के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। ये सीक्वेंस रेसिड्यूज इसके हैं। ये हर एक रेसिड्यू का कोड, प्रोलीन 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 सीरीन, तो दिस इज प्रोलीन प्रोलीन प्रोलीन, दिस इज XYZ coordinate of every atom. This is nitrogen, this is C alpha, NCC NCC, as I described in last class. So this is nitrogen, C alpha C alpha, इसके XYZ coordinates, temperature factor है, structure factor है, ये सब। बट इम्पोर्टेंट क्या है, XYZ coordinate of each atom, हर एक एटम जो है उसका ये कोऑर्डिनेट, यही हमारा काम आता है। चाहे डॉकिंग हो, मॉडलिंग हो, सिमुलेशन, कुछ भी हम लोग काम करते हैं वो इस एटॉमिक कोऑर्डिनेट के आधार पर ही करते हैं, और यही हमारा काम आता है। तो ये चीज़ तो हम लोग हटा लेते हैं और ये काम करके वापस से इसको लगा देते हैं। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, इज द एटॉमिक कोऑर्डिनेट ऑफ ईच एटम। फास्टा फॉर्मेट होता है, सिंपल फॉर्मेट, जिसमें जो भी DNA का सीक्वेंस है उसके ऊपर एक पहली लाइन जो है वो कमेंट लाइन होती है, जो कि ग्रेटर देन साइन से स्टार्ट्स विद द ग्रेटर देन साइन। जिन बैंक डेट्स एंड जिन बैंक आईडी उसका ये इसका एक्सेशन नंबर है, उसके बाद में कमेंट लाइन फॉलोड बाय दिस, और अल्टीमेटली कई बार डबल कोटेशन मार्क होता है। इस तरीके से सिंपल लाइन जिसमें पहली लाइन जो है वो कमेंट है, उसमें इस सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन जो डाल सकते हैं एक लाइन में डाल देंगे, बाकी पूरी सीक्वेंस है। जितने भी सॉफ्टवेयर, ऑल सॉफ्टवेयर्स मेक यूज ऑफ दिस फास्टा सीक्वेंस। ओके, डाटा बैंक से सर्चिंग के लिए, ओके, नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट this. So madam is there, so let's stop here and then let's see tomorrow we can cover further thing in bioinformatics. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. So this is the second week of your course, and over the next 6 months, as Dr. Solanki must have told you, various topics on this computer-assisted drug design will be covered. Various techniques and the practical aspects about the use of different tools available for drug designing will be discussed by the experts. So when we talk about this drug discovery, and then we talk about the computer-assisted drug discovery or CADD, so there are a large number of computational tools and softwares and platforms available. You might have some freely, accessible, and there might be some of them which are not freely available. But with a proper structure of this weekend course, you will come across, because Dr. Solanki, now this is the 5th season of the course, so the BISR is conducting this. What more relevant things in the current perspective are required to be learned will be discussed more. And the experts, very renowned experts from each of the area, a specific area, will be talking to you. There will be ample opportunity and the support from the BISR for the clarification of any
things which are required, and you will be given some exercises also during the course. And if you have any, things to be discussed, so there the issues will be addressed. And if the participants are willing, they will learn many new techniques. Today, I am here to give you a brief, overview of the role of computational chemistry in rational drug development. So because this whole thing, the computer-assisted drug design and whatever tools are available, they are used for various types of, modules are available for drug designing. Everything is based on the principles of computational chemistry. So computational chemistry is the backbone of the computer-assisted drug design. I will discuss today some of the basic things so that those participants, I know many participants in this course may be from the chemistry background, and many of the participants may be from the biology and the other fields who are not that much currently versed with the chemistry. So all those tools and softwares and the platforms, they take advantage of the principles of theoretical chemistry, which with the help of computers becomes computational chemistry. And just an overview and brief idea about the principles of computational chemistry which are being used in computer assisted drug design will be discussed today by me to give you some idea of few things which you might not be knowing. So as you all know already, when we talk about the drug designing, so the drug or the medicine is a substance which has a physiological effect when administered into the body. And the drugs are chemical entities. So the chemistry is there. They are the molecules acting on different targets in our body. And these targets may be enzymes. Drug molecule might be acting as inhibitor. The drug molecule may act as receptor, agonist or antagonist. Then the drug molecule may act as blockers for some ion channels in our body. And they may be, acting on the transporters, and they may act as DNA blockers. So when we talk about the drug discovery, a particular, disease is in picture. And the biochemistry in our body has to be considered. So whatever type of biomolecule in our body has to be considered for the treatment, the drug molecule has to be a related one. And different types of biomolecules in our body may need a chemical entity known as drug to act as what I just said, act as enzyme inhibitor or DNA blocker or ion channel blocker or like similar things. The drug designing process as a whole depends on these three, basic principles. One has to build chemical insight about the biochemistry of the disease and the biomolecule related to that and the drug required for that. Then one has to discover new molecules and predict their properties. If a new molecule has proper properties which makes it a drug candidate against certain disease. So we know now the traditional drug discovery is very time consuming and expensive, because the traditional discovery used to be a system of synthesizing a library of compounds in the laboratories with, slight difference in the structure of the molecules, the different substituent groups, and then testing them in the laboratories against, particular biomolecule or some biochemistry. So the traditional drug discovery has its own challenges.
the high attrition rates, long timeliness, and high costs. Computational chemistry is here to accelerate the rational drug design process. And the integration of the computational chemistry techniques with the experimental approaches make the drug discovery process a little quicker one and cost effective also. So we know if we talk about the rational drug development, so the key aspects, what are required are they are based on the knowledge and the proteins in our body. So then the stepwise design of molecules with efficacy and safety has to, be there. Computational chemistry guides the rational design. How? Because the computational chemistry, normally the basic role of computational chemistry is in identifying the interaction between the drug candidate and the biomolecule, which reduces, the random screening, and the computational chemistry and the other, techniques, they make the drug discovery process a hypothesis-driven design process. We can see here in this slide the total process of, the drug discovery, how, the drug discovery takes place. So one has to identify the disease, isolate the protein, or identify the protein, and if its structure is already available, then with the help of genomics, proteomics, and other things, potentially identifying the personalized target. Then there is the combinatorial chemistry comes into the picture, rapidly producing vast number of compounds having a particular, activity which has already been identified with the help of high throughput screening, where millions of compounds may be screened with the help of computational tools. And then the process goes on, molecular modeling, changing the structure, ligand based, you will come to know the different types of drug discovery processes, and finally identifying a molecule having property of a drug molecule, and then the other studies goes on the toxicity and the other things, and then in vitro, in silico models to test that molecule against that particular disease, preclinical testing, and then the drug is approved. So the process is pretty, time consuming. How our computational chemistry techniques help us in making these processes, the timeline of these processes, a shorter one. So as we can see from the previous slide, the drug discovery process may be divided into four basic, parts. One is the basic research on the disease and the other things, and then the target identification, and then is the lead discovery, and then is the particular candidate selection, that a particular molecule which has the drug-like properties. So you must have by now come across such terms, the hit molecule, how to screen the hits. So hit molecule is actually a molecule which has been shortlisted from the output of a compound screening that has demonstrated to have specific activity at the target protein. And then the screening hits form the basis of the lead optimization and chemistry program, which increases the potential to increase the potency of the chemical series at a primary drug target protein. So the structure may be changed little by little and see how the efficacy of that particular molecule changes by making small changes in the structure of the drug candidate itself. So the two important factors in comprehending the beneficial effects of a drug molecule are the molecular level understanding of how a drug works in our body, and the second is what biomolecules it targets. So we discussed previously, like, main molecular targets of drugs are proteins.
So once the target is identified, we have to collect the knowledge about the understanding of how the drug works in our body. For that, we need to have some insight on how the drug interacts with its target, because it is very much important in deciding the therapeutic approach for a patient. So the doses of a drug and its in vivo efficacy are influenced by three, main thing. First is the how strongly the drug binds to a receptor. Second is its solubility, that a drug is there, it is effective, but it has to reach the site of action in our body. So how it has to be administered in our body. Then some other biopharmaceutical properties have to be considered, and all these properties depend on the structure of the molecule and its interaction with the receptor. So the biomolecular interaction between the biomolecule, the protein, identified target, and the drug candidate is very important to understand. Then the screening with computational tools followed. So first of all, you will see whatever process is going to be followed, it will involve, first of all, the molecular docking experiments to identify the biomolecular interactions. You can identify after the docking of a drug candidate with a protein, target protein, and then the screening with other computational tools, and then molecular dynamics experiments, and then the experimental validations is also required. And thermodynamic studies and the other things if required have to be considered. So there are some computational processes and some experimental things in the laboratory which are required in the overall process. But here in this course, in this weekend course, mainly we will try to learn the computational tools available for analyzing the computational part. Biomolecular interactions, as I said, have to be identified to proceed, further. They may be defined as the interactions and contacts either between different biological macromolecules, protein, nucleic acid, etc., or between a biomacromolecule and the ligand. Understanding of these biomolecular interactions plays a key role in various points you can see on the slide. In understanding various biological reactions at the molecular level, studying host gas phenomena, for the drug designing using structure-function relationship, for the biotherapeutic activity through stability and aggregation, in understanding the mechanism of drug action, in measuring the reactivity of drug molecules for particular target, in determining the suitable target for a particular drug molecule, etc. Biomolecular interactions have to be studied. Our primary target right now is to understand how and what biomolecular interactions are available or possible with the drug candidate and the biomolecule. So almost all biological processes are a result of a sequence of interaction events between biological macromolecules and the small molecules, which we may term as ligands. Therefore, the physiological action of a ligand or a drug molecule is usually controlled by the possibility of different biomolecular interactions with biomolecules. Analysis of biomolecular interaction between biological macromolecules and small drug-like molecules is key for drug discovery, and we need the analytical techniques to probe whether these biomolecular interactions are present or not. If they are present, we need to characterize them. What type of biomolecular interactions are these, and then discriminate what type of biomolecular interaction is required actually for the drug molecule to be effective against a certain process in the body to make it act as a drug molecule. And to identify the biomolecular interactions, again, two types of methodologies may be applied. The first is the experimental method, which may involve the biochemical as well as biophysical methods.
And the second type is the computer-aided techniques. So now here we can see in pictorial mode that the analytical techniques to identify biomolecular interactions may be divided into two types. First is the experimental techniques, second part computational tools. The experimental techniques normally they may be categorized as optical methods, spectroscopic methods. Then there can be non-optical methods and then molecular methods. Similarly, the computational tools may again be divided into different categories. The first type, when we start doing these computational things for drug discovery, the molecular docking, followed by molecular dynamics, and then the latest QMMM methods, which incorporate the quantum mechanics as well as molecular mechanics. Experimental techniques under these three categories, the optical methods, non-optical methods, and the molecular methods, may be further categorized into different types of, variety of experimental techniques are available. Spectroscopic techniques, which we put in a group as optical methods, may be NMR, Raman spectroscopy, FTIR, UV visible fluorescence, circular dichrometry, and the other techniques. Similarly, the non-optical methods, they are also available. Variety of methods are available, and the molecular methods. So not going in detail in these experimental techniques, we come back to the computational chemistry. So what is computational chemistry actually? If we go for the definition of the computational chemistry, it is basically the theoretical chemistry which is combined with the computer simulation. What is the theoretical chemistry? It is the theory. So theory of the chemistry, when we talk about, so everything comes back on the quantum mechanics. So the structure of the molecule, it depends on the structure of the atoms and the interaction between the nuclei and the electrons and the other thing. Then the models, molecular structure, properties, and interactions. So computational chemistry helps us in identifying, exactly what molecular structure in a particular state will be. When we talk about the molecular structure, so there will be always a global minima for a molecule. There can be, the organic molecules. Normally, the drugs are the organic molecules, and they have multiple, functional groups and the atoms. And there may be the possibility of various conformations, various conformational isomers. So there will be a global minimum energy state, and then there might be some, higher energy states also. And the properties of a molecule in the minimum energy state and the higher energy state may vary. And when you need a molecule to interact with a particular biomolecule, there has to be considering what we have studied earlier, the lock and key model or that thing. So and during the molecular docking experiments, you will see your ligand or the drug candidate has to, get fitted at a particular place in the biomolecule. So the conformation there may not be the global minimum. So if the conformation is not the global minimum, there is certain distortion in the structure for making the interactions between the ligand and the biomolecule at a certain level. To identify those interactions, the techniques can be there, the quantum mechanics, molecular mechanics, and molecular dynamics. So that is how the computational chemistry helps us in predicting, in designing, and optimizing the drug molecules against the interaction with certain biomolecules. Computational chemistry uses the laws of physics and physical chemistry based on certain algorithms and computer resources to simulate chemical events and calculate chemical properties of atoms and molecules. In drug design and discovery, diverse computational chemistry approaches are used to calculate and predict those events, such as the drug binding to its target and the chemical properties for designing potential new drugs.
Now coming back to the different, levels of the computational chemistry, molecular mechanics is the most popular method used to obtain molecular models as it is simpler to use and requires considerably less computing time to produce a model. So whenever we start for this computer assisted, drug design, we do some docking experiment. All those experiments are normally based on the principles of molecular mechanics. In molecular mechanics, it is assumed that the total potential energy of a molecule is given by the sum of all three energies of the attractive and repulsive forces between the atoms in the structure. These energies are calculated using a mechanical model in which atoms are represented by balls whose mass is proportional to their relative atomic masses, and these atoms are considered to be joined by mechanical springs corresponding to the covalent bond in the structure. So very simple molecular mechanics model is used for those docking calculations. Molecular mechanical calculations are normally based on isolated structures at 0 K, 0 Kelvin, and do not take into account the effect of the environment on the structure. Using this model, E total, the total energy, may be expressed mathematically by the equations known as force fields, where E total is, the summation of all types of stretching, vibrations, bending, torsion, van der Waals, and Coulombic interactions. So all these interactions, considering the molecule to be made up of different atoms represented in the form of balls attached to each other by the covalent bond, which may be represented as springs. So they are not rigid. There can be, distortions in the molecule. So the force field parameters from ab initio calculations are normally used in the modeling studies on drug interaction with biological targets. The targets are normally, as I said previously, are receptors, enzymes, or other biomicromolecules. They involve large chemical systems. In molecular mechanics, molecules are described with ball and string model, and forces can be calculated from potential energy functions that consider structural properties such as bond length, etc. So when we talk about the ball and spring model, so we consider the bond length and the potential energy of the system can be considered. Here you can see different types of, vibrations. In a diatomic molecule, there is only one type of, vibrational motion can be possible. It is a stretching vibration. If you have a 3-atom molecule, in a 3-atom molecule, what will happen? The number of movements will increase. There will be stretching, symmetrical stretching, asymmetrical stretching, both the bonds stretching at the same time, or one is stretching and the other one is compressing. Then there can be bending and the other types of bending means the change in the bond angle. And the moment you keep on increasing the number of atoms, the different types of motions, the vibrations, they increase. When you have, 4 atom in a chain, you can see here in the figure C. So there can be the change in the torsion angle also, and so on. So I have given here the reference of publication where you can see that how the force field, because the Umber force field, they are the most widely used ones in the molecular docking calculations, how they can be calculated. So some formulas have been shown here as an example. You need not know all these formulas, okay, how these formulas are derived and how they are going to be used, but still to have an idea how these force fields, they have been incorporated in the docking calculations, what you are performing.
Then moving forward to the quantum mechanics, the next level of our understanding of the molecular structure, which are based on the Schrodinger wave equation. And these methods do not require the use of parameters similar to those used in molecular mechanics. But when you do the quantum mechanics calculations or QM calculations, the computational time used is large because all the interactions within a molecule between the nuclei, different nuclei or different atom, and the electrons revolving around them, all possible combinations of the interactions are considered. So the QM method is based on realization that electrons and all material practical particles exhibit wave-like properties, and mathematics of wave motion are applied here. So here, this equation, the Schrodinger equation, is used to build the softwares which perform the QM calculations. Quantum mechanics is useful for calculating the values of so many, values for the molecules to a large accuracy may be calculated using quantum mechanics or QM calculation. One can calculate the values of ionization potentials, electron affinities, heat of formation, dipole moments, many other physical properties of atoms and molecules. And to calculate the relative probabilities of finding electron in a structure, which makes possible to determine the most likely points at which a structure will react with electrophiles and nucleophiles. Because when we talk about the chemistry or the chemical reaction, normally the reactions are between the electrophiles and the nucleophiles. But for the purpose of, the drug designing or the study of the systems for drug development, we require the interaction between the negatively charged centers or the positively charged centers of the system. Not as a whole, the electrophile or the nucleophile, but there may be a point where some electron density is more or some electron density is lacking. So to assess the nature of the binding of a possible drug to a target site, these quantum mechanics applications may be used. What is the advantage of, quantum mechanics? Why quantum mechanics? Because the classical mechanics was inadequate for electron interactions to describe the electronic interaction, and QM describes the electronic structure of molecule very precisely. And we need those precise, results for the drug discovery, because to understand those interactions, it is essential for enzyme catalysis, drug receptor binding, charge transfer, excited states, predicting reactivity and stability. So many types of studies, they can be taken up from the QM results. Different types of, QM methods which are normally used today, they are ab initio methods at maybe at different levels, Harty-Fock level, MP2 level, CCSD, cluster, computational, that method. They are very accurate but very costly. When we say costly, we mean that the computational system or the supercomputers are required, a very large size of memory or the hard disk is required, and the computational time required is very much. So the computationally costly. Then came the density functional theory methods. Density functional theory methods are, something where the principles of quantum mechanics are applied, but at certain points, the computer does not do whole of the calculation, but use certain functionals. Functionals are the function of functions to make, the computational cost, to decrease the computational cost, because they are faster, but the results are quite accurate. So the accuracy of the DFT calculations are very, close to the experimental results, saving the computational time.
The third type of methods are semi-empirical methods. Semi-empirical methods are very fast. They can be, done with very, ordinary type of laptop or a very basic desktop computer, but the results are approximated. No accurate results are obtained. Semi-empirical methods may be used where you want to study the trends. If you have a library of compounds, if you have a series of compounds, and if you want to study that how the change in the structure will change the certain property, maybe the ionization potential or the homo-lumo gap or something, you are not interested in the exact value, but you are interested in the trends. So to study the trends, one may use semi-empirical methods because the results are not very accurate, approximated, but when you are comparing a large number of systems, the trends may be studied and they are very fast. Within, minutes and seconds, the calculations are done. Now, today, more popular are the QMMM hybrid methods. So these QMMM hybrid methods, they make use of combining the quantum mechanics with the molecular mechanics. As we know, our biomolecules are very large sized molecules. The structure is complex. The number of atoms are, manifold. So QMMM hybrid methods, they treat the biomolecule or the larger system or the environment with the molecular mechanics, and the active site of the protein and your drug candidate can be treated with the quantum mechanics. So you get pretty accurate results about the type of interactions and the quantization of the interaction. Applications in drug discovery of the quantum mechanics may be considered in, binding mechanism elucidation by studying the hydrogen bonding, pi-pi staking, charge transfer. So very, deep insight and the exact quantification of these types of interactions may be obtained from quantum mechanics. Enzyme catalysis studies to identify or to study the reaction pathways and for getting the activation energies, calculation of activation energies. For the prediction of properties by the study of pK value, solubility, redox, lipophilicity, these all values can be calculated from the QM calculations. Design of novel scaffolds by studying the electronic descriptors, the reactivity descriptors, the HSAB principle, according to HSAB principle, nucleophilicity, electrophilicity, these can be calculated. So the quantification of a value, homo-lumo gap, because the homo-lumo gap is very important if you talk about the charge transfer interactions, pi-pi sticking interactions, or certain other types of interactions between different systems. Molecular mechanics, if we compare with the quantum mechanics, we can see here the quantum mechanical methods deal with electrons in a system. So the calculations are computationally expensive and very time consuming. On the other hand, the molecular mechanics, which are based on the force fields, they ignore the electronic motions and calculate the energy of the system as a function of the position of the nuclei. So these calculations are very fast. However, as I said earlier, the molecular mechanics cannot provide answers that rely on the electronic distribution of a molecule or the exact values of certain properties. QMMM calculations, which have become more popular during recent times, they are used for calculating the properties for a large chemical library using QM. That would be a time consuming and cost prohibitive. So if you want to calculate the interaction between, the drug molecule and the protein completely with the quantum mechanics, so that will be almost, taking very large, time and the computational cost, and then having the same calculation for a large number of library would be almost impossible. So high accuracy QMMM calculations, the hybrid type of methods, they are multi-scale computational methods to study ligand binding. They can be used using the combination of quantum chemistry that represents the ligand
and the molecular mechanics that characterizes the protein and the solvent, the modeling time can be drastically reduced without sacrificing the accuracy of the results in many cases. During drug design, QMM calculations can be used to generate QM-based electrostatic potential maps of the receptor binding site to determine the protonation state of key residues of the binding pocket and to dissect reaction mechanisms of enzymes that are drug discovery targets. So nowadays, the robust, drug discovery softwares, which have automated built-in feature, have these QMMM methods built in. But if one doesn't have the access to those, the latest, because many of the softwares, they are very costly, if one has the knowledge about where exactly the QMMM technique is required to get answers of certain specific, issue, one can select that small part of the system, biomolecule and the drug candidate, and can manually do the QMMM calculation as well. So the drug designing strategies may be divided into, two basic types: the structure-based and the ligand-based. In structure-based, computational assisted drug design system, you have a target structure, then you look for the interaction with the ligands, you do ligand docking, and then de novo design, then molecular dynamics calculation, pharmacophore modeling. You proceed like that. In the ligand-based computational assisted drug design, your pathway will be, the structure of the ligand, the information about the structure of the ligand. Then you will go for the QSAR studies, and then you can do pharmacophore modeling, making certain changes in the drug candidate, and then go for ligand-based virtual screening. Structure-based drug design cycle can be divided into, the following system, the following chain of events: target identification and validation, then assay development, virtual screening, then high throughput screening, quantitative structure activity relationship, QSAR, refinement of compounds, characterization of prospective drugs, testing on animals, later on clinical trials, and FDA approval. So during this course, you will come across many, examples and specific, examples, different processes shown here on this slide. You can study using a particular, to computational tool and identifying a particular process. So here, taking an example for those who are beginners in this area, because we know when we float this type of weekend training course, we have certain participants which don't have much background of the drug molecular interactions, or when we say molecular docking, when we say molecular dynamics, what exactly it means. For those, participants, you may see the molecular docking as a process which fits your ligand in the receptor with the help of computational tool to have certain stable structure. So that ligand receptor complex, here you can see in this slide at the bottom that the molecule has fitted in the DNA, intercalation is there, and certain broken lines are shown there which represent certain biomolecular interactions. So your computational tool or the program will fit that ligand molecule in a certain pocket of the biomolecule and bring the system to a lower energy state. When your system reaches a minimum energy state, the distance between the different, residues on the biomolecule and different atoms of the ligand, they are converted into different types of, biomolecular interactions, which I told you previously, maybe hydrogen bonding, that may be van der Waals type of interaction, and the other different types of interaction.
which you may identify how much is the distance between two atoms, which is defining a particular type of interaction. So, the computational assisted drug design, the principles, they are based on the structure function relationship, the binding between biomolecule and the drug candidate, understanding the control, biomolecular, macromolecular binding, biochemical mechanism. Molecular recognition is to be studied. How do enzymes recognize and bind the proper substrate, and the guest host chemistry. So these are certain aspects. The chemistry or the processes between behind these processes, one has to understand for getting better, understanding of what results you are getting from the docking calculation or the other calculations. So the binding interactions are how nature controls processes in living cells. Enzyme substrate binding leads to catalysis in our body. Protein nucleic acid binding controls our protein synthesis. So there are different types of interactions that are required for certain biochemistry or biochemical process in our body. Molecular recognition, can be done by identifying different types of interactions, which I told you previously can be hydrogen bonding, charge-charge interaction, dipole-dipole interaction, pi-pi interaction, hydrophobic interaction, and similar. Structure searches is another aspect which one has to understand. 2D substructure search, 3D substructure search, and 3D conformationally flexible search can be understood. So one has to have an idea if you are talking about 2D structure. So on a paper you have drawn a molecule, or you take a molecule from certain library from the internet. You draw it with the help of CamDraw or any Cam Sketch or something. It is not the exact structure of the molecule. Normally, all those molecules, they have 3D structures. And that 3D structure is a dynamic structure, is not a rigid structure. So the conformations, they are flexible, they may be changing with time. So one has to understand that normally the molecule has to be identified in its lowest energy state. And then from that lowest energy state, to fit in a particular biomolecular pocket, certain conformational changes might be required. And if certain conformational changes are required, there will be, the energy will go up, but the electronic, distribution within the molecule will also change. Lipinski's rule of 5 is one important, point in drug discovery. You might have come across this during the last 2 days. So the rule states poor absorption and permeation are more likely to occur when there are more than 5 hydrogen bond donors, more than 10 hydrogen bond acceptors, and the molecular mass is greater than 500, or the log p-value is greater than 5. So while identifying a drug candidate, this has some importance. Here I have shown certain, examples where the drugs, they have been identified by using the structure-based approach. Not going into detail. I will talk a little bit about the computational approaches to identify the drug biomolecular interaction. Here, when I say multi-target drug design, so another aspect, important aspect is multi-target drug design, because the drug design process itself is very time consuming. If already a molecule has been identified as a drug for certain disease,
we may identify multiple targets in the body for the same molecule. During the COVID period, we have seen initially there were no drugs available for corona. The drugs which were already approved for other disease were tested for the coronavirus, because the time consumed during the studies for their toxicity or the other things, one doesn't have to spend. So here, for the identification of multi-target approach, again, the same two types of studies may be taken up, the ligand-based or the structure-based, and the different types of approaches shown here. So coming to sum up how computational chemistry helps in the drug discovery process. The computational techniques are there to guide chemical intuition. Whenever we talk about drug discovery or identifying the interaction between a particular biomolecule and the drug molecule, what sort of interaction, the chemical intuition, has to be identified. So am I audible? Yes, ma'am. Yeah. So to design new host or guest enzyme inhibitors, one has to determine the structure of, for example, so one example I have taken here, to determine the structure of guest or host, to build a model of binding site, to search databases for new guest or host, docking of new guest and binding sites, to predict binding constants or activity, to synthesize guest or host. So one has to have some knowledge or intuition about the chemical structure and how the computational chemistry program or the computational chemistry helps us getting some insight in the structure and then later on the interaction. So coming to the overview of the computer-assisted drug design in drug discovery, how computational these tools help us. They help us in many modes. A therapeutic target is identified against which a drug has to be developed. Depending on the availability of structure information, a structure-based approach or a ligand-based approach is used. So these are the different, processes one can take up. So you have to take up a, chain of events. So first you have to identify the target, and then whatever, information you have to choose whether you are going for a structure-based approach or you are choosing a ligand-based approach. And then a successful investigation series has to be taken up to identify multiple lead compounds, and then lead identification is followed by several cycles of lead optimization, and then identification, a particular compound which can be identified as a drug candidate.